you study about is electrical machines like alternators, induction motors, synchronous motors. Hi everyone, जय हिंद, जय भारत, जय माता। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। आज मैं बात करने वाला हूं बच्चों कि आपको क्या पढ़ाया जाता है वो 4 मंथ्स के कोर्स में। जब आप एक बीटेक करा हुआ है आपने इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो आप जब वो 4 मंथ्स का कोर्स करते हो ईटीओ का फ्रॉम वेरियस कॉलेज लाइक एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम अकेडमी और समुद्रा इंस्टीट्यूट और तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट और ग्रेट ईस्टर्न और एससीआई, तो इन 4 महीने में आपके ऊपर बहुत मेहनत करी जाती है। आपको एक नॉर्मल इंजीनियर से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑन बोर्ड शिप मर्चेंट नहीं बनाया जाता है, और यहाँ पर वो शिप स्पेसिफिक पढ़ाई होती है ताकि आप जहाज पे जाके लॉस्ट फील ना करो। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। पहले आपको क्या पढ़ाया था? वी आर टॉट अबाउट सेंसर्स, उनके बारे में, लाइक लेवल सेंसर होते हैं जहाज के ऊपर फिटेड होते हैं, उसके अलावा प्रेशर सेंसर्स होते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, और भी बहुत सारे तरह के सेंसर्स होते हैं। सो सेंसर्स के बारे में पढ़ा जाता है। सेकेंड थिंग दैट यू आर टॉट इज अबाउट वॉल्स। अब यहाँ पर मैं वॉल्स की बात नहीं कर रहा सिर्फ नॉर्मल ग्लोब वॉल्व और स्क्रू डाउन नॉन रिटर्न वॉल्व, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग वॉल्व्स जो कि न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होते हैं या हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होते हैं। तो उसके अंदर सॉलिनॉइड वॉल्व्स लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं। तो कैसे एक बटन दबाने से दूर नीचे कितना बड़ा वॉल्व ओपन या क्लोज हो जाता है, ये सब इलेक्ट्रिकली पॉसिबल है, राइट? तो उसकी आपको पढ़ाई कराई जाती है। Number 3 is you need to study about PLCs, that is programmable logic control. Today when you are on ship you just press a single button and suddenly your whole inert gas system gets ready. Suddenly your IG fan starts, your scrubber pump starts running. Suddenly after a certain timer this happens and that happens. So this is a logic control fitted in programmable PLCs. So you have to study PLCs. ये क्या होता है, कैसे काम करता है and all those stuffs. Very important. Next comes is calibrators. Pressure calibrators, temperature calibrators. These are your hand shots. Like when you are on ship, you have to check various alarms like generator के low by low pressure alarm, low by low pressure trip. Same goes for main engine as well as generator. And there are so many other sensors fitted out there. So with the help of pressure calibrator, you can check those pressure sensors. With the help of temperature calibrator, you can check those temperature sensors. So you need to study how they work and how they are operated, which is very, very important. Next, you study about is electrical machines like alternators, induction motors, synchronous motors, transformers. Now guys, theory is something different, but on board ship you are going to overhaul these big motors. Induction motors, synchronous motors, you're going to work on transformers live on board ship. So that theory is very important along with this practical knowledge. So when you are in those 4 months, when you're working in college, please work with your hands, make your notes, carry those notes when you go on ship as well. They are going to be really very handy. Ask as many questions to the instructor during these 4 months, because on board ship it will be embarrassing if you ask a second year, sir ये transformer में primary winding कहाँ से आ रही है, secondary winding कैसे आ रही है. It looks bad, right? So notes बनाना शुरू करो. Make this habit. Whatever you learn in the workshop, you make those notes and take along with you when you go on ship. Next and very important is studying the electrical diagrams. Whenever you see electrical wiring diagram, you need to be able to assess कि यार ये कैसे काम कर रहा है, इसमें फ्यूज को फिटेड है, MCCB कहाँ फिटेड है, MCB कहाँ फिटेड है, अच्छा ये टाइमर कैसे फिटेड है, how are these relays connected and they are working. These are very, very important factors, guys. कभी भी शिप पे कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसे चीफ इंजीनियर गोइंग टू आस्क यू, अच्छा भाई वो सर्किट डायग्राम निकालो एंड टेल मी हाउ इज इट वर्किंग, हाउ इज इट फंक्शनिंग. रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ऑन बोर्ड शिप. सो प्लीज इफ दे आर टीचिंग यू इन कॉलेज, पूरा जूस निकाल दो और सीखो उसको. नेक्स्ट इज लर्निंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में देयर आर लॉट ऑफ स्टफ्स टू अंडरस्टैंड एंड रीड, बट whatever you are being taught in those 4 years regarding electronics, please do that very well. Then comes refrigeration system and air conditioning system. यहाँ पर even if you go through the Dreamers package, you will find a lot of theory on refrigeration system as well as AC system. I have met a lot of electrical officers in my life जिनके fundamentals were never very strong about AC system and reefer system. So troubleshooting becomes difficult. So if you understand how does the thermostatic expansion valve work, what is the function of this suction pressure, what is the function of this discharge pressure, why is it increasing, why is it decreasing, in a proper way, making your notes in those 4 months, that will be very very handy, guys. Please do that.
And guys, lastly, understanding how does a boiler work and what all automation is fitted in the boiler, you need to understand that. Similarly, you need to understand how does the internal combustion engine work, how does the main engine work, how does the generator work, where all the sensors are fitted, why are these sensors fitted, what all the importance is, how are they working. You need to know that. And if you need to know that electronic system, you have to understand the basic fundamental of how does a boiler run, how does the IC engine run, and that is why it is taught to you on board ship. How do you maintain boiler water level? Why is it required to be maintained? All these stuffs are really very important. They are taught you in your 4 months of college. Make notes. Take those notes along with you on board ship. Keep working hard. Keep reading manuals. Don't give up. You will become a fine electrical officer on board ship. If you have liked this video, please share it with your electrical officer friends or those who are aspirants to become electrical officer on board ship, because this video series is very important. If you are looking for a platform जहाँ पर कि आपको नॉलेज मिल सके about what to study, how to study, very soon on Merchant Navy Decoded we are going to launch our electrical content, our electrical dreamers package. Join our telegram group Marine Electrical Decoded so as to form a strong community where everybody is sharing their knowledge and content. Thank you very much. Jai Mata Di.